Good morning. Good morning, Good Rituji, morning. Devi, Morrisji. Good Hi, morning, good ma'am. morning. Devi. There's so Good much of morning, ma'am. excitement, Good morning, you know. all. Good morning. Good There's so much of morning. Forward to excitement. the I was class, just Devi. moving Deepti. here and there, and I was listening to all the audios. So, uh, Good morning. Good sir, morning. because you're reading today, everybody's so excited. I mean, like, this is so beautiful, Vijayji. So it's like a men's day So today. John is Yeah. excited since yesterday. Yeah, it's special for us also. Yeah. It's like really lovely. Such an encouraging group we have, isn't Yes. it? Yes. And in fact, John, sir, you're reading such a beautiful chapter. Yeah. This is something that I keep telling everyone, no, that, you know, for our health, for our life, for the abundance in our life, for success, for money, for relationships, for everything, it is the 5 elements. When the 5 elements are set right, everything is set right in our life. Okay, and today is a chapter about that. It is like, it's a beautiful chapter. We've already done about food and water in chapter number 8, the magic ingredients. And this basically is about the air, one of the 5 elements that we consider as God. Basically, this is what actually is God, the 5 elements in the nature. We are made up of 5 elements. It is, of course, like it's a reflection of the 5 elements outside. Anything going wrong in our body means there is a disturbance of the 5 elements. And जो आज का चैप्टर है जादुई हवा है उसका हिंदी में नाम the air that we breathe, जो सांस हम लेते हैं, so life is equal to the breathing, right? और सांस लेते हैं तो हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट करता है तब तक हम अलाइव होते हैं. When the heart stops beating, it's like this lifetime is over, and then we take a transition. So iska, the image is also like that. I'll just explain the image here. The magical air that we breathe. So here we see that you can see a lot of space. You can see Mother Earth. You can see the light that is the element of fire. Element of water is there. The tree is alive and standing. It means there is water in it. Okay. The moment it becomes dry, it becomes dead. So the element of water is also here. So you can see the element of fire because there's a lot of light. And we know that जब पेड़ से ऑक्सीजन निकलती है तो वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके कारण ऑक्सीजन निकलती है और फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जहां सनलाइट नहीं होती, द लीव्स आर डार्क इन कलर, द लीव्स आर ब्लैक इन कलर, and they don't do photosynthesis because the leaves cannot do photosynthesis agar sunlight nahi hoti hai to. So that means the element of fire is also there, and all that releases the beautiful air that we breathe in. And this is the essence of today's chapter. Very important. हम लोग इतने self consumed रहते हैं in our problems that sometimes we don't realize that life is because of, we are not connected to the dewdrops, sunset, sunrise. Now we are. Now we look at the full moon the day full moon happens. Earlier कैसे होता था, अगर full moon आता था तो हम देख लेते थे, सामने दिख जाता था तो देख लेते थे. अब हम फुल मून के लिए मेडिटेशन करते हैं, फुल मून को प्रे करते हैं, फुल मून को एडमायर करते हैं, है ना? I mean, we have changed as people. So we have started celebrating the real gift of nature, as Rhonda Byrne puts it here. वो इसमें डालती हैं the real gifts of nature. And that's when life changes. Okay, so she also said why this chapter has come after we have scaled 22 chapters. This is the 23rd one. So to be able to say thank you to the air, to be able to say thank you to the ocean or the sea, to be able to say thank you to any water body, एक beautiful अगर आपको rose दिखता है, उसको thank you बोलना, admire करना. You know, so when we celebrate the 5 elements, everything in our life is fixed. Mark my words. It is that amazing. I mean, it's huge, it's big. So celebrate the 5 elements, celebrate nature, celebrate that butterfly. You know, when you see that, celebrate the red color of the flowers, the yellow color of the flowers. Okay, celebrate the little leaves in trees. And they'll say from the depth of your heart, say thank you to the nature. Breeze aapko lag rahi hai, like abhi the fan is going on. So it is like, imagine, because of the air, you're sitting so comfortably. Otherwise, all of us would be sweating right now. Okay, so everything has to be in nature. The you know, like sunrise, it's such a beautiful thing. Celebrate the sunset.
when you go for a vacation, dress up for it. Dress up for the sunset, to witness the sunset going down the sea or wherever it is, down the mountains. Okay, celebrate that sunset. I mean, in mountains, there is always a sunset point. So there are so many people who come to celebrate. Okay, now when you go near the ocean also, you know, there is always a sunset. I mean, like places from where you see the sun going down into the sea. So celebrate that in your own way. So when we are closely connected to the nature, we see 90% of our problems of life will be gone. And mark my words, it happens like that. This is the reason sometimes it's very compelling way में आपको बोलती हूँ that when you step out, एक पेड़ को, एक पौधे को आप ना देख के, observer effect. Okay, you don't have to throw thank you. Look at it and say, thank you, tree, for giving me oxygen. Thank you for that greenery around. Thank you for maintaining the balance and the environment around. Okay, so this is how beautiful it is. And today's chapter, ध्यान से हम पढ़ेंगे. It's a small chapter and a very special person is reading. Debut sir कर रहे, तो आज John sir पढ़ रहे, and then yeah, please start reading. Good morning, one and all. I am thanking God for the nature for the great opportunity of reading today. The day 23, 15th September 2023. The magical air that you breathe. It's quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled and enchanted by Mary Ellen Chas, educator and writer. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me now. I went from sweating the small stuff in my little world and day-to-day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. Those words made me think more and more about the bigger picture. It is not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it there is no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it is anywhere else in the galaxy, we would most likely to be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine-tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It's difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done
to sustain you. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than few minutes. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the deer on the grass, my life and the people in it, every material thing I have ever dreamt of having poured down upon me, I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. One of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has the depth of gratitude will receive absolute abundance. Today, stop and think about the glorious air you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of air moving inside your body. And feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. And be as genuinely grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that is not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words, thank you, as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself with it with every breath you take. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become true alchemists who can effortlessly turn every part of their life into gold.
Magic practice number 23. The magical air that you breathe. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for the blessings as you can. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. After you have taken the 5 breaths, say the magic words. Thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. Just before you go to sleep tonight, hold your magical rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, sir, so much for reading for all of us. It was indeed beautiful, and I could see that you were enjoying, but you were slightly stressed out. So read more. It was beautiful. Thank you so much. Thank you, one and all. Okay, bye. Yeah. So this is like a chapter where we people mostly are so much consumed by our problems. I mean, anytime we talk, it is always that I've got this problem going on, I've got that problem going on, I have this thing going on. Have we ever said thank you to our life that we have got this human life? Okay. Baki sab to transitory hai. I hope we all know that everything in our life is transitory, isn't it? Things come, things go. There have been problems in the past. Are they not okay now? I mean, like, we make peace with them, they become okay. ठीक है, earlier हमको पता नहीं था कि किस तरह से operate करती है ये law of universe and you know how we all are so magnetic. Every thought of ours is so magnetic. Did we know that? नहीं पता था ना हमको. So अब हमको पता है that every thought, the moment that thought has come, it is magnetizing something of the same frequency or maybe bigger. ठीक है, तो अगर आपका negative thought आया, we are magnets. So now expect something bigger to come to your life, which is negative. But if you have a positive thought, we are magnetizing something which is positive. So the first thing, every day when I'm still in bed, I've not gotten up, my eyes have opened. First thing I do is I always thank my life and always say that life is beautiful and the world is a beautiful place to live. Okay? Start your day with this thought. Because बहुत बड़ी बात होती है that you know आपको human life मिली हुई है. वैसे तो सब ठीक ठाक है, जो problems आई है वो हमने invite की है. Because consistently हम लोग negative zone में रहते थे, अभी भी जाते हैं negative zone में, but we catch hold of ourselves. Okay, because हमको पता है you're magnets. It was day before yesterday when you know something happened in the evening, something official. And you know I was very upset about it, and then immediately I thought that okay, so I was upset about it, I did well, but then I was like, you know, consciously saying no, thank you for the road, and thank you because I was driving that time and all of that. And uske baad, because but that thing was not leaving my head very easily, it was not a very small thing also. So the next moment that came was even worse. Okay. So then I thought nothing. I reached home, I had my dinner, and then I went out for my gratitude walk, like we call it magic footsteps. ठीक है, वो किया मैंने good 10 minutes के लिए. And after that, of course, I started admiring all the little things in my life that I had. And then I thought that, you know, I'm deliberately, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मुझे. Deliberately, thank you करके, and not going into that zone again. And everything was sorted. I mean, like after that, feeling frequency तो हमको change करनी पड़ेगी, because remember that we are magnets. And when we say thank you to our life, we are saying thank you to all the 5 elements also. तो इसी में लिखा हुआ है ना that we sometimes we have been criticizing people. So इसमें लिखा हुआ है say thank you that you have lives, and say thank you that are people around.
That's what makes it so worthwhile. Imagine अगर हम अकेले होते इस पूरे दुनिया में, ठीक है? So this chapter teaches us that, you know, it makes us look at the bigger picture of life and say that जब आप उन चीजों को जो नेचर है, एनवायरमेंट है, उसको जब आप थैंक यू बोलने लग जाते हो, तो आपकी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम डिसिपेट होने लग जाती है एंड दे जस्ट रन अवे, एंड इट्स दैट ब्यूटिफुल. So now we have to take a pause in our life, and when we are out, look outside from our balconies, terraces, wherever we are, while we are taking a walk in the morning, या जब भी हम ड्राइव कर रहे हैं, and say thank you to the road. That road that you're going on and driving so conveniently is made by the Mother Earth, by all the things that came out from there. Okay, the food that we are eating is the first element. So we have 5 elements. Of course, we have the earth, and after earth, now we have water. जिस तरह से मैंने सिखाया था, the legs are connected to the earth, so that's Mother Earth. After that is the water, because then we have in the body, we have all the urinary and the excretory system. So water element is there. And then of course we have the digestive fire. We call it digestive fire. So the stomach area, the middle abdomen, that is the element of fire. And then we have the respiratory system in the chest area that we call the element of air. And then the element of space. All above is the element of space. Okay, so these 5 elements which are making up our body, इसीलिए तो हम जिंदा हैं. So it is outside. So saying thank you to the nature becomes actually very important for us. And deliberately, अगर नहीं हो रहा है, if you're so consumed by your problems, आप actually एक बार सोचो that earth पे there is only till a certain level that we have air. When we fly, always the air hostess announces, no, कि अगर एयर प्रेशर कम हो जाता है तो ऊपर से मास्क गिर जाएगा, put it on your mouth. और दूसरों की जान बचाने के पहले अब दूसरों की मदद करने के पहले अपनी मदद कीजिए, you know, all of that. So इसीलिए, because as we go higher, सांस लेना मुश्किल हो जाता है ना, जब भी higher altitudes पे हम जब जाते हैं, so वहाँ पे oxygen is very sparse, बहुत कम होती है. So this is the reason sometimes we have nose bleeds and ear bleeding, सारे orifices से blood निकलता है, because internal hemorrhage हो जाता है, अंदर की body is not acclimatized to that kind of a low pressure and low oxygen. So this is why high altitudes पे problem आता है ना? So it means the way the things are designed, human life is there only on planet Earth. Of course, there are aliens on the other planets. They have come on the Earth. We know about aliens. कुछ images में हमने देखे भी हैं that aliens are there, है ना? Spaceship में they have come to the Earth and this thing. But they all wear a helmet, like how we deep dive into the sea with an oxygen cylinder and all. वो वैसे रहते हैं, उनके पास नहीं है oxygen या जो भी air है. But oxygen is there on this planet Earth. और ये sun से just rightly placed है. Had it been even 5 inches closer to the sun, we would have actually died of heat. You know, I mean, it wouldn't have been livable. So हम मर जाते. इतने अच्छे से ये distance, like सारे जो cosmic radiations हैं, this planet Earth is so specifically placed that human life सिर्फ यहीं पे possible है. तो उसके लिए हमने कभी thank you बोला है? Like larger picture है वो. अभी भी हम अपने पचड़ों में पड़े रहते हैं पूरे टाइम. ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेड नहीं मिल रही है, you know, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है. So जब हम larger picture की तरफ देखते हैं, as I always tell you, that's almost like running a 1,000-mile race. Okay, so the 1,000-mile race already incorporates 100, 100, 100, 100, isn't it? So run a 1,000-mile race. आपके सारे relationship problem, health problem, work-related problem, business turnover, or whatever it is, any physical illness that we may have, वो सब comes in that, within that 1,000-mile race. Okay, वो सब sort हो जाएगी, क्योंकि आप 1000 मील की रेस दौड़ रहे हो ना, तो फिर वो छोटी छोटी जो चीजें आपकी जिंदगी में हो रही है, वो 100 माइल के बराबर भी नहीं है, वो उससे भी छोटी है. तो इसीलिए जब हम nature, you know, the real gifts of nature, Rhonda Byrne ने इसमें लिखा है, that's the real thing, you know, that we need to say thank you to, because उसकी वजह से तो जिंदगी है तो प्रॉब्लम है ना. वो तो बहुत ही माइन्यूट चीज, मतलब if we actually see, we can pin it down to the minutest of a thing, but the larger picture is that we have life and we have these 5 elements, we have sunset, we have sunrise. So celebrating them will bring so much abundance and success and joy and good health in your life. That's very clear.
आप कभी भी 5 एलिमेंट्स को करना है, एयर को करना है, पेड़ पौधों को, जो पशु पक्षी हैं हमारे आसपास, ठीक है, जब हम उनको थैंक यू बोलते हैं, उस ग्रास को थैंक यू बोलते हैं, चिड़िया को थैंक यू बोलिए, और जो भी हैबिटेट जो एनिमल्स हैं अलग अलग, जब हम उनको थैंक यू बोलने लग जाते हैं तो हमारी सारी लाइफ की जो छोटी 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 प्रॉब्लम्स होती हैं वो चली जाती है। यूनिवर्स के लिए वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, वो सारी आप देखोगे कि दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड हमारी लाइफ में कंफर्ट्स, लग्जरीज एंड अबंडेंस आने लग जाती है। प्रिया आपको होस्ट हो, सो कंफर्ट, लग्जरी एंड अबंडेंस अगर आपको एंजॉय करनी है तो आप करके देखो ये सनसेट, ड्यू ड्रॉप, सनराइज, ब्यूटीफुल एयर, मदर अर्थ, planet earth. I don't know how many times we've said thank you to the earth, thank you to the planet, the whole planet, to all the 9 planets. Now we've started doing, right? So this is one thing I ritually do, saying thank you to the sun, moon, all the heavenly bodies. कई बार तो नाम नहीं पता होते ना, इतने ज्योग्राफी इतना सारा पढ़ा हुआ नहीं है, but of course we do remember sun and the moon, all the constellations, okay, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, okay, Mother Earth, fire element, water element, air element and the space element. अगर आप इनको भी दिल से थैंक यू बोलोगे ना, यू सी दैट आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है लाइफ में जो चल रही है, इट जस्ट कुड बी डिप्रेशन, इट कुड बी एंजाइटी, इट कुड बी सम पेन हियर एंड देयर, वो सब आपका जाता रहेगा. यू विल सी अबंडेंस इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. ओके, लाइक वी ऑलवेज से नो दैट thank you universe that I'm successful in all areas of my life. वो actually आप देखोगे होता हुआ अपनी जिंदगी में. When you actually say thank you to the real gifts of nature, ये gift of nature है, और ये gift के लिए जब कहीं से कुछ मिलता है उसके लिए thank you बोलना तो manners होता है ना. So this is what we are going to do from today. So it says that ये Rhonda Byrne का sentence, but it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude, So like little things like sunset, a tree, the ocean, dew on the grass, my life and the people in it, every material thing I've ever dreamt of having poured down upon me. Okay, so अगर हमको abundance जिंदगी में, आपको सुख चाहिए, मटेरियल चीजों की भी सुख चाहिए, like a luxury car, a luxury house, this, that, luxury travels, उसके लिए भी वहीं से आएगा. Like she said that जब मुझे real gifts of nature के लिए मैंने thank you बोला, तो मेरी जिंदगी में बहुत सारी मटेरियल थिंग्स जिनका मैंने सपने में सोचा था वो सारी मेरे लिए हकीकत में बदल गई, है ना. So then she says, when we can feel truly grateful for the precious gift of life and nature, like the magical air that we breathe, हम एक डीपेस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड पे पहुंच गए. तभी तो ये चैप्टर 23rd नंबर पे आया है. व्हाई वाज़न्ट देयर इन द फर्स्ट 10? क्योंकि जब तक हम सारे मटेरियल चीजों के लिए थैंक यू नहीं कर लेते ना, तब तक हम अपनी जिंदगी के बाहर की चीजें, अभी सारे हम अपने लाइफ के बाहर की चीजों के लिए थैंक यू बोल रहे हैं. जो जितनी भी अब प्रैक्टिस है, चैप्टर नंबर 23 से लेके 28 तक, ये सेल्फलेस प्रैक्टिस है जिनका हमारी लाइफ में डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता, बट इनडायरेक्टली हमारी किस्मत बदल जाती है इन सब की वजह से. अभी तक तो we were working for a dream list till yesterday. 22nd chapter was before your very eyes. That is the 10 dream list. ठीक है, but like अब से we are doing things very selflessly. तो अभी ये क्या है, अब कल भी बहुत selflessly करेंगे of things that don't matter to us directly. That means अभी तक हम अपने लिए काम कर रहे थे. We filled up our pot, right? We filled up our pot ना, अपनी ड्रीम के लिए काम किया, अपनी हेल्थ को थैंक यू बोला, अपने पैसे के लिए थैंक यू बोला, मैजिक चेक में अपने लिए पैसे मैनिफेस्ट किए, अपने खाने और पानी को थैंक यू बोला. तो हर चीज अपने, जिन लोगों ने हमारे लाइफ में डिफरेंस लाया, हमने उनको थैंक यू बोला. बस अभी तक मी चल रहा था. आज से हमारी जो जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं from 23rd to 28th chapter is selfless outside our life. but ये इतनी पावरफुल है, कहते हैं कि जब selfless practice हम किसी के लिए करते हैं ना, तो वो बहुत मल्टीप्लाई होके it comes back to our life. इसीलिए अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप सारे उन लोगों के लिए मतलब ग्रेटिट्यूड सेंड करो जिन लोगों को हीलिंग की जरूरत है. and you see that energy that radiates out from your life will multiply several times and come back to your life.
Okay, so start doing these practices, you know, selflessly. So आज की भी ये वाला भी तो assignment हमारा selfless है. हमने कहाँ सोचा, हमारी डायरेक्टली लाइफ में तो इम्पैक्टेड नहीं है, मतलब हमने पहले तो कभी इस तरह से सोचा नहीं है ना. हम अपनी चीजों के लिए थैंक यू बोलते हैं. थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव. थैंक यू फॉर माय क्रेडिट कार्ड्स that you know pays before I even use the thing, or before I even make a payment to them, I can use that money in advance. Thank you so much to all the ATMs that makes it so easy for me to just take out cash whenever. Thank you so much to all my debit cards. Thank you to all the cash that I have in my wallet. Thank you that my wallet is always full of cash. Thank you for all the money that I use बचपन में, in my childhood. ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है. अब हम रियल गिफ्ट ऑफ नेचर जो है उसके लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं. और इसके बाद यू सी लाइफ विल नॉट बी द सेम अगेन, बिकॉज द काइंड ऑफ रेजोल्यूशन एंड अबंडेंस दैट वी विल रिसीव आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी बिग. सो आज की प्रैक्टिस में हमको जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, जिससे हमें लाइफ मिल रही है, हमें उसके लिए थैंक यू बोलना है. बहुत स्पेसिफिकली ये वाली प्रैक्टिस होती है. इट इज इनहेलेशन एक्सहेलेशन into five times करना है हमको, because there are 5 elements in the nature. Okay, so inhalation, exhalation. So how you can also do how I do it, because some of you have been doing this practice थोड़े टाइम से, आप कुछ टाइम से कर रहे हैं, तो अब आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल आ गया है. तो एक एक एलिमेंट को एक एक सांस में थैंक यू बोलो, है ना. देयर आर 5 एलिमेंट्स. सो अगर पहले वाले में आपने कहा, सो इनहेल स्लोली एंड एक्सहेल. Feel the feeling of the air going inside and feel the joy of breathing it out. Okay, that is what is written. इसका मतलब अंदर ले रहे हो तो महसूस करो, और बाहर छोड़े हो तो बाहर छोड़ रहे हो तो खुशी महसूस करो. मतलब देने में खुशी रखना सीखो. ये मैसेज भी है इसमें, है ना, कि देने में खुशी है. अंदर ले रहे हो तो फील करो. फील करो मतलब ग्रैटिट्यूड फील करो. और जब दे रहे हो तो आप बहुत जॉय के साथ दो, ठीक है. दिस इज व्हाट इट मीन. सो आज जो हम सांस लेंगे अंदर, पहली वाली सांस में थैंक यू टू द एलिमेंट ऑफ अर्थ. सेकेंड वाली सांस लेंगे तो थैंक यू टू द एलिमेंट ऑफ वाटर. द थर्ड सांस थैंक यू टू द एलिमेंट ऑफ फायर. देन थैंक यू टू द एलिमेंट ऑफ एयर, एंड देन थैंक यू टू द एलिमेंट ऑफ स्पेस, बिकॉज इन्हीं की वजह से एयर आ रही है. Isn't it? All the 5 elements एयर में तो सब होते हैं ना. एयर अगर जो ब्रीथ कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो पेड़ पौधों से निकल रही है, दैट मीन्स मदर अर्थ को थैंक यू हो गया. उसके बाद ऑब्वियसली वाटर है. एयर ड्राई कभी भी नहीं होती है. जब भी वाटर इज समथिंग दैट गेट्स रेडिएटेड, मॉइस्चर निकलता है पेड़ पौधों से हमेशा, ठीक है. एयर उसके साथ मिक्सड होती है. देयर इज ऑलवेज अ लेवल ऑफ वाटर कंटेंट, नहीं तो ड्राई एयर में हम वी कैन नॉट स्टे अलाइव. उसके बाद थर्ड एलिमेंट के कारण ही एयर निकलती है. जब सनलाइट पड़ती है तभी फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, और फोटोसिंथेसिस होती है तभी ऑक्सीजन निकलती है बाहर, है ना. फिर एयर एलिमेंट तो है ही जो हम सांस लेते हैं, एंड इट इज ऑल कंटेन्ड इन द स्पेस. इमेजिन इफ देयर वाज नो फ्री स्पेस, इट वुड हैव बीन क्लॉस्ट्रोफोबिक, राइट. सो ये पांचों एयर को जब हम थैंक यू बोलते हैं, वी आर सेइंग थैंक यू टू ऑल 5 ऑफ देम, एंड दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. सो टुडेज प्रैक्टिस इज दिस. 5 different times of the day, maybe at 8 o'clock, 11 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock, and 9 o'clock in the night, or whatever sequence you want. Obviously, some of us work, तो हम ऑफिस में पता नहीं हमको याद रहेगा, नहीं करेंगे, लेकिन इसको फिर by 12 o'clock 3 times करके 2 times. So 5 times today we have to take 5 sets of inhalation and exhalation. सांस अंदर लेनी है और सांस छोड़नी है, और हर बार सांस अंदर लेनी है, सांस छोड़नी है 5 times. उसके बाद बोलना है thank you for the magical air that I breathe. Every time you have to say this. So you've taken a set of 5 breaths, say at 7:30 in the morning. उसके बाद बोलना है thank you for the magical air that I breathe. फिर आपको याद आया around 10 o'clock, or maybe while you're driving, doesn't matter. If you're driving, you're standing in a queue, आप बैंक गए हो, वहां पे सोफे पे बैठ के आप वेट कर रहे हो for your turn to come, whatever it is, wherever you are, doesn't matter. You can do this practice everywhere. हालांकि Rhonda Byrne says that try and be outside if you're doing this practice, or stand near your house window. You can be inside your home, but you should be near the outside this thing, so near the window. Maybe if you have a balcony, if you're in the kitchen, so kitchen के window से बाहर देख के, you know, like that way. So try and be outside if you can. And then
we can do this practice. So 5 different times of the day, five times inhalation, exhalation, where we are just feeling the air going inside and feel the joy of giving out, that we have to do. So she says if you want to close your eyes, you can do that as well. अगर आपको उससे ज्यादा फीलिंग आती है. और इसमें हमको बिल्कुल लाइफ लाइन मिली हुई है कि आप वॉकिंग के टाइम कर सकते हो, वेटिंग इन लाइन यू कैन डू, व्हाइल शॉपिंग यू कैन डू, और एनीवेयर एट एनी टाइम दैट यू वांट. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. That's important बस. ठीक है. और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आप देखना आपकी लाइफ में कितना चेंज आने लग जाएगा. और ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है. You can do it at any point of time, any day, and then see how, then you will not be affected by these little things because आप बहुत empowered feel करते हो. और ये last paragraph extremely important है. It says in ancient teachings it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, उनका gratitude उनको उनकी लाइफ में उनको एक अलग level of power देगा, है ना. So अलग level of power देगा. So this is what happens. और ये बिल्कुल turn around stories हमारी लाइफ में होने लग जाएंगी, है ना. अपने आप इस तरह से होता है. जैसे जब सरोजी ने बताया था दैट आई डोंट हैव मनी, तो एकदम से मेरे मुंह से निकल गया था कि नो यू आर गोइंग टू गेट द मनी इन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स. मैंने यूएसडी बोला था, शॉर्ट फॉर्म, है ना. एंड देन अ लिटिल फ्यू डेज लेटर शी सेड कि मुझे यूएसडी में पेमेंट हो गई. जबकि उस दिन उनको, जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उनके पास 1000 रुपीज बैंक में पड़े थे एंड शी वाज क्राइंग एंड शी वाज मिसिंग अ हस्बैंड, है ना. और कहती मेरे पास पैसे नहीं है, वो कैसे. बट देन शी वाज शी सच अ फाइटर, लाइक अ रियल lioness, and how she is fighting in her life and reaching new levels of success. अब एकदम से मेरे मुंह से निकल गया था नो यू आर गोइंग टू रिसीव मनी इन यूएसडी. आई डोंट नो हाउ इट जस्ट कम्स, ओके, बट हो गया था ना. तो बिकॉज ये प्रैक्टिसेस कर करके हम सब उस लेवल पे पहुंच गए जहां पे वी से समथिंग एंड इट हैपेंस. लाइक वी जस्ट से समथिंग एंड इट हैपेंस. This is the level of gratitude. This is the power of gratitude. So उसमें यही लिखा हुआ है that your gratitude will reach a new power, and now you will become a true alchemist. Alchemist is a person who can turn any normal stone, roadside stone, into gold. Okay, उस केमेगार को बोलते हैं जो पत्थर को भी सोने में बदल देता है. So उसको alchemist बोला जाता है. केमेगार हिंदी में बोलते हैं इसको. और अब वो पत्थर को सोने में बदलना, that means every little life's problem now you can turn it into gold. That is the best outcome, isn't it? So that is the kind of power saying thank you to the nature gives to us, even if it is to earth, even if it is to the sun, even if it is to the distance. Say thank you to the distance of the sun and the earth. It's because of that we are alive actually. अपनी जिंदगी के लिए like ऐसे हमारी कोई मदद कर देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं ना. सोचो ये कितनी मदद है, रोज हो रही है, जब से पैदा हुए तब से हो रही है, लेकिन आज तक रियलाइज ही नहीं हुआ था कि थैंक यू बोलना है. आज तक एक पेड़ को देख के थैंक यू कभी नहीं बोला है. चलते फिरते मैं भी बोल दिया होगा, मैंने तो नहीं बोला था. In all these years that I've been alive, I've never paused and looked at the tree and said thank you so much and I love you. I've never done that. I have never looked at a China rose and said thank you for your beautiful red color and for your beauty. Thank you so much and I love you. I've not periwinkle जो छोटा सा purple flower होता है, छोटे छोटे से होते हैं shrubs, ठीक है, never did that. Now I do it. Now when I go for my run and when I work out, so I do my strength training in an open park. So I've always been the gym person, but जब से ये gratitude मेरे life में आया है ना, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ओपन एयर में करती हूँ क्योंकि वो जिम एनक्लोज्ड होता है. बिकॉज इतना कनेक्शन सिखाया है हमको, दैट व्हेन यू गो आउट, जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना इसमें, दैट यू माइट बी फीलिंग लो बट व्हेन यू गो आउट इनटू द ओपन स्पेस यू कम बैक एन्चैंटेड एंड beguiled and happy. So that actually happens. Nature makes us like that. आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा ना, दैट वहां के कर्टन्स और कुछ कुछ ग्रीन होते हैं, पार्टीशंस ग्रीन होते हैं. ऑफ कोर्स आजकल तो हॉस्पिटल्स आर ऑल 5 stars, लाइक दैट, बट अदरवाइज पहले green curtains होते थे, green, because green is healing. Green is very, very healing. Green means healing color. Green is representation of the mother earth, So this is the reason the curtains and everything used to be green earlier. So अभी सब change हो गया है, but then हम अपने आप को connect करके रख सकते हैं ना nature से. तो हम रोज, of course ये वाली practice तो हमको करनी है. इसके अलावा, the practices I've given to you is that when you go for a walk or when you're driving, 5 पेड़ों को ऑब्जर्वर इफेक्ट के साथ
देख के थैंक यू, आई लव यू और उसके आगे आपको जो बोलना है, आप अपने आप पेट से अपनी डिजायर और विश या जो भी आप डिस्कस कर सकते हो, यू नो, बिकॉज इट इज लिसनिंग, एवरीथिंग हैज गॉट अ लाइफ, एवरीथिंग इज एनर्जी एट द क्वांटम लेवल, दैट ट्री इज लिसनिंग टू यू एंड यू विल सी दैट आपकी वो विश, आपकी प्रेयर, उसका आपको परफेक्ट रेजोल्यूशन मिलेगा. द ट्री कैन डू दैट फॉर यू, ऑल्दो इट्स नॉट टॉकिंग. Okay, it's that huge because tree is a representation of the universe. So every day when you connect to the nature, try and just be grateful for the little things, find out more and more things, be excited when you see a butterfly. बचपन में होते थे, अब नहीं होते, है ना? So let's effortlessly, you will become a true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. So today in the morning when I was meditating before the session, this is the prayer that I had done. I mean, like, I didn't remember this was the line. In fact, I didn't even think about what chapter are we doing today. नहीं सोचा था, but मैंने ये जरूर इंटेंशन किया था कि आज का जो चैप्टर जो लोग भी सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता था ये वाला चैप्टर है, ठीक है, सीरियसली, मतलब कॉन्शियसली नहीं सोचा था. ऑफ कोर्स आई न्यू दैट 22 के बाद यही वाला आता है, but that whosoever is listening to my words in today's chapter and reading the content of this beautiful Rhonda Byrne's chapter, their life has to fundamentally change for a very big reason, in a very big way. So this has been my prayer today. I don't normally do, there are different prayers every day. So this is what I had done today. And I'm so happy that इसमें भी यही चीज लिखी हुई है, that, you know, all of us are becoming an alchemist who can effortlessly, बिना मेहनत के, turn every part of their life into gold. ये जिंदगी बिना मेहनत के, life is easy and effortless. So please add one more word to it. Life is beautiful, easy and effortless. Okay, so आज की practices, the magical air that you breathe. सुबह सुबह count your blessings. We start our day by writing 10 blessings in the language. I'm so happy and grateful that I have, you know, like I have a beautiful house where I live in safety, security and luxury and comforts. और उस फिर सेकेंड पॉइंट, तो ये सारे 10 पॉइंट्स लिख के थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर एक के बाद रीड करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलना है. आज की प्रैक्टिस 5 times टुडे. टेक ब्रेथ, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सांस अंदर लेनी है, सांस छोड़नी है, दैट्स 1. फिर सांस अंदर लेनी है, सांस छोड़नी है, दैट्स 2. सो सेट ऑफ 5 ब्रेथ्स वी नीड टू टेक, 5 दफा, 5 अलग अलग टाइम पे, ठीक है. और उसके बाद बोलना है thank you for the magical air that I breathe, that gives us life. Okay, and feel that feeling of air going inside and the joy of giving it out. It's really nice, lovely. ठीक है. And then रात को सोने के पहले it is magic rock practice. पत्थर हाथ में पकड़ के think through the day, scan through the surface and dig out things जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो. और कौन कौन सी ऐसी चीजें हुई है, छोटी छोटी चीजें, अगर आपने पानी पिया था जाते ही, अगर आपके लिए पैंट्री बॉय पानी लेके आया, थैंक यू सो मच. फिर उसके बाद कोई कॉन्वर्सेशन हुआ, थैंक यू. किसी ने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया, इवन इफ दे सेड योर लिपस्टिक शेड इज ब्यूटीफुल, थिंक ऑफ दैट. सो कीप आस्किंग योरसेल्फ, और क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, अच्छा फिर क्या हुआ था. अपने आप से जब क्वेश्चन पूछते हो तो ही जवाब मिलता है, ठीक है. नहीं तो फिर वी फॉरगेट सम इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ द डे. सो कीप आस्किंग यू, और क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, ठीक है. अदरवाइज ऑल्सो, सो जो क्वेश्चन पूछना तो हमने सीख लिया है ना अपने सबकॉन्शियस माइंड से. तबीयत भी खराब हो रही है तो पूछना है दैट टू द इन्फिनिट पावर एंड इंटेलिजेंस माय सबकॉन्शियस माइंड, प्लीज मुझे बता दो मैं बार बार बीमार क्यों पड़ रही हूँ. आपके मन में आ जाएगा और वो चीज हमेशा के लिए चली जाएगी, है ना. ऐसे ही तो वर्क होता है. So yeah, this is about this chapter. Now we go to the other one. So we have another dynamic man reading for us after John Sir and Mr. Vijay Sinha. Thank you, ma'am, for generosity. नहीं, मैंने आपको हमेशा स्माइल करते हुए देखा. So Right. Vijay ji has been my padosi, my neighbor for so many years, and Yes. his wife is still my very close friend. So we celebrate our birthdays together. अब ये लोग दूर रहते हैं, so Manju comes for my birthday and I go for her birthday. So उस तरह से, और on and off WhatsApp पे बात होती रहती है. So I've seen विजय जी बहुत सालों से, है ना, जब से हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, Yes. तब से हम, I think I've been here for many years now, so like 20-25. आप भी बहुत साल से यहाँ पे थे. And Yeah, last year yeah. I think he moved out of Eastern. We have Very been seeing- bindas, very physically fit,
You know, someone I run, I and Vijay ji have always been running. है ना विजय जी? हम दो Yes. जने तो हमेशा रन करते थे और बहुत सालों से हम लोग रन कर रहे हैं and our we are like in a condo apartments and we have a nice running track around our buildings. I'm still in the same one. He's moved out. So, you know, we have that and बहुत सालों से we have been running together. Yes. We have Fitness been freak. growing gracefully. Yeah. We are going strong when it comes to our fitness. Yes. Yes, please start reading. So we are reading the chapter about healing. Okay. So किस तरह से अभी तक जो हमने पढ़ा था. So we'll start with ये थोड़ा सा अलग topic है. Normally मैं आपको run through कराती हूँ कल का so that if it is connected. So today's it's not so much connected to what we were doing. So we'll start from remember also. हाँ जी विजय जी. Yes, thank you. Remember also that every one of us at some time must make the transition from physical life into another realm. Most people at this time make this transition through the vehicle of an illness. If someone has made the decision on a deep, usually unconscious level that it is time to leave this life, it may be inappropriate or ineffective for them to try to heal themselves or for their loved ones to try to heal them. If attempts to heal seem ineffective. 1 second Vijay ji. I'll just fix it. Just lost that page 1 sec. No. This is the one it is. No. I'll read once again, please put. I'll just, Yeah. yeah. This is the one? No, No. we started with remember. Yes. Healing others. This is the one we were reading. If someone has made a decision Yes, on a ma'am. deep, Ma'am, this one is, yes, ma'am. Yeah. If someone has made the decision on a deep, usually unconscious level that it is time to leave this life, it may be inappropriate or ineffective for them to try to heal themselves or for their loved ones to try to heal them. If attempts to heal seem ineffective, there may come a time to focus on visualizing a peaceful, satisfying completion of life and enabling of death, embracing of death. Of death, yeah. So this talks about that there are times जब लगता है actually, जैसे suppose किसी की kidney और liver like multi-organ failure है, somebody is on a ventilator, ठीक है? तो cling मत करो, pray मत करो उसके लिए कि वो और जिंदा रहे, ठीक है? Accept that and transition time comes in everybody's life. We don't want that person to suffer. Suppose कोई कोमा में है and brain dead है, आप प्रे करोगे और आपकी अटैचमेंट उस पर्सन को लाइफ से नहीं जाने देगी. मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ना जो मैंने एक बुक में पढ़ा था, सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग. सो देयर वाज अ मदर, उनकी बेटी थी इन हर मिड 30s. या शी वाज इन हर मिड 30s. सो दिस वुमन ऑफ कोर्स वाज इनटू ग्रैटिट्यूड एंड ऑल दीज प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं. So her daughter, who was 32-33 year old, had a 10-year-old son. Okay. Now, mother and that 10-year-old son were so attached to each other that this mother actually इनका कुछ terminal stage आ गई थी and because of certain reasons she could not survive. वो ventilator पे बहुत time से कोमा में थी.
सो आपका सबकॉन्शियस तो सुन ही रहा होता है ना, इवन व्हेन यू आर इन कोमा. सो अब वो उसकी अटैचमेंट टू द 10-year-old चाइल्ड, उसका बेटा था 10 साल का, इस चक्कर में वो ट्रांजिशन ही नहीं ले पा रही थी. 1 month she was clinging to life. And everybody in the family were praying कि वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, miracle हो जाए, miracle हो जाए. But doctors had given up, and doctors said that she will not be surviving now because वो situation ऐसी थी. और ventilator पे आपको artificially heart pump कराया जाता है, naturally तो नहीं होता ना. But वो फीमेल अपने बेटे के कारण नहीं जा रही थी. तो फिर ये वाली जो प्रैक्टिशनर थी, वो तो ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करती थी, मेडिटेशन भी बहुत करती थी, जो उस लड़की 32-year-old की जो मम्मा थी, ठीक है, when she realized that my daughter is not able to go only because of her attachment to her 10-year-old son. तो वो एक दिन गई, ठीक है, तो उन्होंने अपने पहले घर वालों को समझाया कि तुम लोग ये प्रे, महामृत्युंजय जाप, there are so many things in Hinduism because they were Hindus, so they would do all those techniques की prolong हो जाए लाइफ बेटी की. तो उन्होंने कहा कि देखो उसका जाने का टाइम आ गया है, अब वो बहुत सफर कर रही है, वेंटिलेटर पे पेशेंट बहुत सफर करता है. वी माइट फील लाइक कोमा में और इसमें, या पैरालिसिस स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक अटैक हो जाता है उसमें, और अ पर्सन इज लाइफ लॉन्ग ऑन व्हील चेयर. So that person is very helpless because he's not able to do anything himself. और पता नहीं है उसकी कितनी जिंदगी है, maybe 30 years more वो इसी कंडीशन में रहे. We should not expect that person to live. No, that's selfishness. So this female जो मदर थी बेटी की, तो ये गई, उन्होंने अपने सारे अपने हस्बैंड से और अपने अपने सन्स, 2 बेटे और भी थे उनके, और बाकी इन लॉज के साथ और सबके साथ बैठ के बताया, लाइक उनके हस्बैंड को भी, जो बेटी के जो हस्बैंड थे, जो इनके दामाद थे, उनको बैठ के बताया कि देखो इसका ट्रांजिशन का टाइम आ गया है, मेरी बेटी बहुत सफर कर रही है हॉस्पिटल में, कोई बात नहीं, हम इसे जाने देते हैं क्योंकि मैं इसको और नहीं ऐसे देख सकती, एंड आई डोंट थिंक दैट इट इज अप्रोप्रिएट फॉर अस टू कीप प्रेइंग एंड डूइंग अ महामृत्युंजय जाप एंड समथिंग फॉर हर एनीमोर. I think just we should let her go. We should let her go peacefully and with all calm and this and that. So घर वालों ने इनसे बहुत लड़ाई की कि what kind of mother you are, और आप ऐसे अपनी बेटी को जान ले रहे हो और वेंटिलेटर हटाने को बोल रहे हो and all of that. वो बहुत, मतलब घर में ये सब हुआ. Anyhow, she did not listen because she said that I have to do what's right for my daughter. She went, she sat by the bedside of her daughter, this thing, and it's a real life story, okay? She went by the bedside and she told her daughter, उनका नाम लेके, कि बेटा आप जाओ and take a beautiful new life again, and wherever you go, and go with a lot of peace, happiness and harmony in your head. और अपने बेटे की चिंता मत करना, वो मेरे पास है, मैं उसको बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दूंगी और उसको कोई कमी नहीं आएगी, and I will look after him the way you would look after him. Okay, and within half an hour that daughter took the transition. I mean, she passed away. Okay, this is a real life story of a person who's in Delhi. So it is all right if in case somebody has been suffering for a very long time, it is selfishness that that person should stay alive. उसको आप घर ले आओगे, वो बेड पे ही रहेंगे, वो उठ नहीं पाएंगे, है ना. तो इसलिए वो आपकी अटैचमेंट या वो जो हुक किया हुआ होता है ना हमने अपने इमोशन से और प्रेयर से, जिसके कारण दे आर नॉट एबल टू टेक अ ट्रांजिशन, दैट दे आर नॉट एबल टू डाई, मतलब उनका सोल छोड़ता ही नहीं है शरीर को, क्योंकि शरीर से हमने इतना प्यार कर रखा है कि हम उनको अपने सेल्फिश प्रेयर्स के कारण सफरिंग दे रहे हैं. इस वाले पैराग्राफ का मतलब ये है ना. तो ये हमको बहुत ध्यान, तो इसीलिए इट इज जस्ट ओके, एम्ब्रेस डेथ, है ना, एंड विजुअलाइज दैट बहुत ही पीसफुल सैटिस्फाइंग कंप्लीशन ऑफ लाइफ आ गया है. ये हमको करना पड़ेगा. ये एटीट्यूड, ये हमने रोंडा बर्न की जो पावर बुक में थी, उसमें लास्ट चैप्टर वाला था, उसमें भी हमने किया था ना कि हमेशा जो लोग गुजर चुके हैं, ऑफ कोर्स हमारी उनकी बॉडी से अटैचमेंट थी, उनकी जिंदगी से अटैचमेंट थी, ठीक है, सोल उनका अभी भी बहुत खुश है. अगर वो सोल नहीं खुश है, इसका मतलब हम उनको लैक और वॉइड के साथ रिमेम्बर कर रहे हैं. सो वी हैव टू रिमेम्बर द लाइक हमारे जितने भी डिपार्टेड हैं हमारे, लाइक आई रिमेम्बर माय फादर पास्ड अवे बट आई हैव वेरी ब्यूटीफुल इयर्स विद हिम. और जब मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ तो बहुत बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें याद आती हैं जो मैंने लाइक माय फादर वाज सो बायस्ड टुवर्ड्स मी between both all the 3 sisters. He would actually so we were living in Udaipur because he got Rajasthan cadre.
So when you're into civil services, you get the state cadres. So this is the reason we were living in Rajasthan for most part of our lives. And वो हर मेरे जो summer vacations होती हैं, then I remember कि वो मुझको दिल्ली लेके आते थे, और यहाँ पे पहले अप्पू घर हुआ करता था. I don't know, some of you may know. अप्पू घर होता था, तो अप्पू घर में मुझे सारी राइट्स देते थे वो बैंड लगा के. उसके बाद मुझे बिकॉज वो सिविल सर्विसेज में थे, तो उनका बहुत एक्सेस था हमारे घर में, मिनिस्टर्स का आना जाना रहता था. तो मुझे पार्लियामेंट हाउस लेके जाते थे, फिर उन्होंने मुझे राज्यसभा लोकसभा दिखाया. फिर पार्लियामेंट हाउस में एंट्रेंस पे अंदर लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा लाइक वो फूड कैंटीन है, वहां पे मुझे साउथ इंडियन फूड खिलाते. आई लव साउथ इंडियन फूड, बाय द वे, आई रियली लव इट. सो मुझे साउथ इंडियन फूड खिलाते थे, ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड होता था. मुझे बड़ा मजा आता था क्योंकि उनके कुक सारे साउथ इंडियंस होते थे. सो हमको अपने पेरेंट्स को ऐसे याद करना है, ठीक है. हाँ, ऑफ कोर्स आई मिस हिम, मेरे डैड है, मिस तो मैं करूंगी, बट ठीक है, उन्होंने ट्रांजिशन ले लिया है. ही इज कम बैक समवेयर, ही इज कम बैक एज माय एल्डर सन एक्चुअली, ठीक है. डिट्टो है, सेम. सो आई कैन सी वट एवर कुशल डज ना इज एग्जैक्टली द वे पापा डज इट. मतलब पापा ऐसे चिल्ड आउट, हाँ ठीक है, मतलब हर चीज के, ही वाज नेवर द वर्कड अप पर्सन लाइक यू राय वो टेंशन, तो बहुत ही चिल रहते थे. सो ये मेरा the elder one is also like that. Ditto all the characteristics. So your loved one come back. They are always there in your surroundings somewhere. Okay. So unko peaceful rehne do. If I sit and cry about and feel the lack of my father's presence in my life, his next life will not be very good. वो जहां पे भी है ना, मतलब उनको प्रॉब्लम्स आएंगी. जैसे उनको कोई ऑफिस का काम करना होगा, उनको फाइल नहीं मिलेगी. उनको कोई अपने किसी चीज के लिए एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनके पेंसिल की नोक टूट जाएगी. ये प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम नेगेटिवली याद करते हैं अपने लव्ड वंस को हु हैव डिपार्टेड. So whenever people have departed, just celebrate their life and think good about them. So the best way is to write. हमने रोंडा बर्न ने सिखाया है हमको, इस वाली बुक में सिखाया था ना, जब उनकी अपनी मदर के बारे में उन्होंने बताया कि मेरे मदर फादर बहुत ही लवी डवी थे, और मेरे फादर पास हुए तो मेरी मदर को बहुत प्रॉब्लम आई शुरू में, बट उसके बाद उन्होंने उनको अपने फादर के लिए ग्रैटिट्यूड, मतलब अपने हस्बैंड के लिए सारी वो चीजें जो ग्रेटफुल थी, जो हस्बैंड के साथ उन्होंने अच्छे मोमेंट्स बिताए, उन्होंने वो लिखना शुरू कर दिया. एंड धीरे धीरे शी कुड कम आउट ऑफ इट, है ना. तो जिंदगी तो खत्म नहीं होती है ना. हाँ, ये वाली बॉडी छोड़ दी है सोल ने, बट उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया है. अब अगर आप बहुत सफर करोगे और बहुत ज्यादा रोगे उनके पीछे, तो उनको नेक्स्ट लाइफ नहीं लिया जाएगा, ठीक है. उनका सोल बहुत ही ट्रबल्ड रहेगा, क्योंकि आप ट्रबल्ड हो, है ना, क्योंकि लाइफ टू लाइफ कनेक्ट होता है ना कई लोगों के साथ में. एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी, सो दैट एनर्जी विल नॉट लेट देम इवन टेक द नेक्स्ट लाइफ. अब वो लाइफ लेने की कोशिश करेंगे, बट जिसके वूम में वो जा रहे हैं ना, उनका बार बार अबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा. वो लाइफ ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कंप्लीशन ही, यहीं से कंप्लीशन नहीं गया ना, यहां से कंप्लीशन नहीं हो गया. यू सी दिस वर्ड, सेटिस्फाइंग कंप्लीशन ऑफ लाइफ एंड एम्ब्रेसिंग ऑफ डेथ, है ना. इस जन्म से सेटिस्फाइंग कंप्लीशन नहीं हुआ है ना, अगली लाइफ में नहीं होगा. फिर अगली लाइफ में नहीं, वो कंप्लीशन के साथ नहीं गए, तो वो उनके उस फीमेल के मिसकैरेजेस होते रहेंगे जिसके वूम में वो जन्म ले रहे हैं, जिनके थ्रू. और वो आते तो आप ही के लाइफ के आसपास आराम से, है ना, आएंगे वो आप ही की जिंदगी में. दैट्स वेरी वेरी क्लियर, मतलब कहीं आसपास, है ना. और उन आइज से, उस फ्रीक्वेंसी के लेवल पे आप उनको पहचान भी लोगे. जब आपकी वो फ्रीक्वेंसी होगी ना, जो एक सोल की फ्रीक्वेंसी होती है, उससे आप पहचान भी लोगे, ठीक है. टेक एन अम्ब्रेला एंड गो, इट्स अबाउट टू डाउनपोर. सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, है ना. सो इसीलिए, सो विजुअलाइज, अगर कोई आपका लव्ड वन जा रहा है मतलब उनकी, आपको लग रहा है कि वो बहुत सफर कर रहे हैं, और लाइक ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, वो उठ नहीं पा रहे, ये नहीं है. इट इज ऑल राइट टू विश फॉर देयर वेरी पीसफुल डिपार्चर फ्रॉम दिस लाइफ, okay, and pray that they have a very satisfying completion of life and embrace death. It is just all right. वो वापस आपकी जिंदगी में आएंगे, जरूर आएंगे, और उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपकी प्रेजेंस वैसी है ना. उस तरह की प्रेयर्स, दैट इज व्हाट इट मीन्स. हाँ जी विजय जी. Yes. Healing others. The same principles that work. So Okay. I don't know. Yes. Yeah. Yeah. The same principles that work in healing ourselves also work in healing others.
This is so because of the oneness nature of the universal mind. This is part of our consciousness that is directly linked with that part in everyone else's consciousness. Since that part is also our link with divine omnipotence and omniscience, we all have incredible healing power that we can tap into at will. It is an amazing thing, but simply changing our own concepts about another person and consciously holding and projecting an image of health and well-being can instantly cure someone in many cases and speed and smooth their healing in many other cases. It is not even necessary for them to know anything about what we are doing, what you are doing. In fact, in some cases, it may be better if the person who is ill does not consciously know. I was brought up with a very scientific and rational background and education, and the ability to heal other people at a distance has been one of the hardest things for me to understand and accept. Yet I have seen it and experienced it too often to doubt it any longer. And there are interesting scientific studies that confirm the healing power of prayer and Yeah, so visualization. this talks about the healing power and prayer. So Vijay ji, आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे. Thank you so much for both the beautiful men to have read for us. John sir, thank you. Vijay ji, thank you so much. So here it talks about healing others. This is the topic. इसमें है that हम में बहुत strong healing power है. हमारी actually पर हम उसको यूज नहीं करते क्योंकि हम वी डिस्कस मोर अबाउट द इलनेस, नॉट अबाउट द क्योर ऑफ इलनेस, है ना. हम हमेशा बात करते हैं उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये हो गया, अच्छा डॉक्टर के पास जाना है, अच्छा मेडिसिन देनी है. हाउ मच टाइम डू वी गिव टू थिंकिंग दैट वी आर हीलिंग दैट पर्सन? दैट्स व्हाट रेकी डज. In Reiki also, we direct all the attention into healing the other person. So that also works by energy. So रेकी यू कैन डू कि कोई इंडिया में बैठा है और कोई अमेरिका में पेशेंट है तो वहां उनके लिए भी रेकी कर सकते हैं. और रेकी कैन बी डायरेक्टेड एंड फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन. बल्कि रेकी से आप ये भी सेंस कर सकते हो कि उनके कौन से बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम है, यू नो, और कहाँ पे हीलिंग भेजनी है आपको. सिमिलरली कल मैंने एक वो भेजा था. सो व्हेन माय फ्रेंड्स डैड हैड अ सर्जरी, है ना, सो मैंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी का वो कोड भेजा था विच आई पोस्टेड ऑन द ग्रुप येस्टरडे. दैट हैज एन अमेजिंग हीलिंग पावर, है ना. सो उसमें हीलिंग वाला जो वो वाला जो चैप्टर है विच इज अबाउट सिकनेस एंड ऑल, हेल्थ वाला चैप्टर, उसमें खूब सारे ऐसे एफर्मेशंस हैं अपने हेल्थ के बारे में है. और दिस पर्टिकुलर थिंग जो विच आई पोस्टेड yesterday, दैट इज फॉर समवन एल्स. Okay, so you can actually do that morning and evening. Agar 5 minutes ke liye we keep repeating that prayer, you know, which I posted yesterday, and you will see immediately it starts exerting its influence, because blessings or energy does not need time to travel, okay, and space. It is beyond time and space, so it will immediately penetrate into that person's life, organ, wherever, and the divine healing will start getting activated in the other person's life. And that is how powerful it is. Priya, you just want to take it forward. I'll go get myself a glass of water. Absolutely. It's very important to let us, like, actually this thing happened with my mom-in-law also. Like, she was suffering a lot. 20 days she was 21 days she was continuously in the ventilator, and she was 75 years old, and from the very beginning only she was very much suffering due to this her illnesses. And ma'am also told, and we all knew that this is the transition time.
But due to this clinging thing now, we were not able to accept it. We just kept on holding, we just kept on praying that, not me, of course, but my father-in-law was very attached with her. Of course, he was, and her sons also. So they were continuously praying that she has to get well. She has. I just said that no, it's being selfish. We are being selfish. We have to release her, and we have to send her. That is healing for her, right? When we know that this is the transition time, and we are doing the prayers so that she can transit peacefully, that is again healing for her soul. That healing is required very much. So yeah, ma'am, you can take over. Thank you, ma'am. Thank you so much for pitching in. So this is what it says. अगर आपके loved ones, आपके friends, आपके colleagues, आपके parents, अगर वो बीमार हैं, उनको healing की जरूरत है, all you need to do is sit at one place, okay? Or you can take that prayer that I posted yesterday. I think someone, can you please post that again on the group, because there are so many people who joined in yesterday. Sure, will do, ma'am. है ना? तो वो वाली जो प्रेयर है ना, उसको आपको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जोसेफ मर्फी दिन में 3 बार 5 मिनट्स के लिए रीड करनी है. 3 times in a day you have to read that prayer for 5 minutes, and then close your eyes and visualize that you're getting the news that the person is absolutely healed. This is what we need to know. We need to do, sorry. Okay, so this is the prayer. It's a very, can anyone read? Vijayji, can you please read it if you can? Like if you're not logged in from your mobile. So. I can, ma'am. It's right in front of me. Achha, please do that. Okay. Okay. Priya, please read. Yeah. The healing presence is right where my father is. My mind is the projection reel, and I now project in my own mind the image of wholeness, harmony, and perfect health for my father. The infinite healing presence that created my father's body and all his organs are now saturating every atom of his being, and a river of peace flows through every cell of his body. The doctors are divinely guided and directed, and whoever touches my father is guided to do the right thing. I now align myself with the infinite principle of love and life, and I know and decree that harmony, health, and peace are now being expressed in my father's body. By Dr. Joseph Murphy. Yeah. So whenever I quote anyone, I always give you the source. So if I've read something in Neville Goddard's book, then I always say that I've read this in that book, you know. So this is also the source, and the page number is also there. So Witt talks about, so this is father because my friend's father had a surgery. ओरिजिनल प्रेयर जो है ये वाली, ये उस बेटी की ममा के लिए है जिस बेटी को अपनी ममा की सर्जरी के लिए छुट्टी नहीं मिली थी, और ये दूसरी सिटी में, एक ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में रहती थी, एक वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में रहती थी. तो ये उसने अपनी मदर के लिए करा था, तो वो फादर की जगह मदर हो जाएगा. ठीक है, अगर कोई और है तो अगर आप उनको नाम से बुलाते हो तो ये उनका नाम आ जाएगा वहां पे. सो whosoever it is, this prayer can be. So 3 times in a day for 5 minutes you have to keep reading it, and you will see like a miracle happening in that person's body. And then after reading, just close your eyes for a while and visualize that you're getting the news that the person is absolutely healed. This is also that you can add on to what we have done today. जो healing others वाला जो chapter है, हमारे पास एक्चुअली बहुत पावर होती है. हम लोग की एनर्जी एक्सप्लोसिव होती है, लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब. हमको पता नहीं होता है, बट वी हैव दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी. नाउ हाउ यू डायरेक्ट दैट एनर्जी इनटू हीलिंग और फॉर डिस्ट्रैक्शन लाइज विद इन अस. हमारे थॉट्स एंड इमोशंस हमारी उस एनर्जी को, उसकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं. ठीक है, व्हेन वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव, सो हमारे जो थॉट्स एंड इमोशंस है, हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है. नाउ यू विल नॉट हैव द हीलिंग पावर. Healing is very very positive energy. Okay, so hence
control the thoughts and emotions. इसीलिए you know, like Dr. Joseph Murphy ने अपने जो following chapters हैं, one was relationship, one was healing, one was something, one was money, one was success and career. So अलग अलग book में segregated थे अलग अलग chapters. But then you know, kind of initially in the first chapter he wrote, your thoughts and emotions are God, because they are deciding that what kind of energy are you carrying in your body, in your environment. Because whatever energy is there, that is how it's going to magnetize. I mean, like, we'll magnetize things likewise, because like attracts like. This is a phenomena. So yeah, this is what it is. So now we will be using more of healing others, because we have that power. Because वैसे भी हम gratitude में रहते हैं, है ना? 580 वोल्ट की एनर्जी है हमारे अंदर, 440 में तो लोग मर जाते हैं. सो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी इतनी पावरफुल है. उसके साथ में किसी को हील करना, किसी को ब्लेस करना, खूब अपनी आवाज को यूज करो. कहते हैं ना वो लॉर्ड बुद्धा, दैट द वॉइस डज द बुद्धाज वर्क, है ना? So use your voice more to bless others, use your voice more for healing, use your voice more for life word things, for happiness, healing, harmony, peace, success, amazing relationships. Use that more and more, and more of that energy when you use in giving to others, वो reflect होके वापस आपके life में आती है, multiplying. And everything else is, you know, not that significant. Just work on your energy. You will see that your life becomes that easy. It's all about that. Everything starts falling into place. Everything gets sorted. Okay, this is what I have seen in my life in all these years. And for everybody, this is an information. And for all the YouTube people जो लोग YouTube पे सुनते हैं, आपको हमारा ग्रुप लेकिन ज्वाइन करना पड़ेगा. Because so what we have done is that हमने अलग अलग chapters of Dr. Joseph Murphy's book के लिए थे, relationships, health, career, money, you know, वो सारे. और हमने जितने भी affirmations उन्होंने दी थी वो compile करी है साथ में. So my department was health. So all these prayers, you know, like हमने तो सबने अलग अलग किए है कुछ, और फिर हमने we have put them together in the form of a PDF which is there on the group. We are going to repost it again because कल परसों में बहुत सारे लोगों ने join किया है. तो आप अपने area वाले में जाके just read through those affirmations जो उन्होंने लिखी थी, और हर affirmation को करने का तरीका उन्होंने यही समझाया है that you have to read it at 3 different times of the day for 5, and if you can read it for 10 minutes, read for 10 minutes. And you know, like then our subconscious starts believing, and the energy jo hoti hai that goes to the other person's life. But most of the affirmations are for our own life. Hamara success, hamara paisa, hamara career, hamari happiness, you know, hamara mental peace, all of that. So yeah, I mean, those affirmations, whatever you relate to, please aap usko use karo. It is for all of us to use only. And so this is the reason why we've done it, because they have changed millions of lives. Dr. Joseph Murphy's books have changed millions of lives. You know, that's how important and prominent we are. So after having done this particular book, we are again doing another book by Dr. Joseph Murphy, which is a PhD level. But I think we are all ready to understand and do that. अगर हमने creative visualization जैसी किताब पढ़ ली, जो normally एक normal group में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी, you know, बिल्कुल ही आपके subconscious और soul को, you know, like it enlivens it. So अब वो वाली book हमको समझ में आ जाएगी उनकी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी. So I feel that we are pretty ready, because अभी ये हंच आया था. पहले मैं सोच रही थी कि वो book समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वैसी वाली है, थोड़ी heavy duty है. So but then now we can we will do it, because ये बहुत ज्यादा बची भी नहीं हुई है अभी. So yes, we have a couple of hands raised. We'll quickly take the sharings because also 5 minutes में meeting end करना है हमको. Yes, Priya, your hands raised. Yes, ma'am. This is a sharing of a beautiful person in our group only. She is on a visit and a trip to Switzerland right now. She, her husband, and her son, they are all traveling. So she called me up yesterday and she said कि जरूर group में share करना. That's what I'm like. She said कि उनको ना, मतलब जैसे हम वहां पर जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, तो per ticket उनको 88,000 rupees extra dollars में उनको INR में pay करना पड़ता है. And they were always certain that they have to pay that, but उनको वो 88,000 into 3 उनको pay ही नहीं करना पड़ा, and they are all there. They're all set to fly there. वो 88,000 into 3, that's a huge amount, and that was unbelievable believable for them.
This one thing. Another thing is the transition flight between the two. They were having short of time, so they were just frazzled that हम लोगों टाइम पे पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, हम लोगों ने कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है वो ले भी पाएंगे कि नहीं. But she said that it was so amazing that everything is turning out so smoothly. She had written a scripting, but उसने कोई पर्टिकुलर उसके लिए प्रैक्टिस नहीं किया था. ट्रैवल को पहले स्क्रिप्ट करके उसने डिजाइन कर लिया था अपने हिसाब से. So because of that, वो 88,000 into 3 उसका वो रेमिट बिल्कुल हो गया. They didn't have to pay. And the transition is also smooth कि next flight भी उनको बिल्कुल ठीक टाइम पे वो बहुत ही comfortably उसको board कर पाए. And now they're enjoying. Yeah, that's what I want to share. It's Okay, so beautiful. Priya, this is like an incomplete sharing, don't you think? Yes, I mean, we ma'am, would but love to know that what is it that the affirmations that were made, क्या affirmations, scripting yeah. की, declaration किया, कौन The सा scripting. gratitude लिखा? Yeah, that's what I said, ma'am. She only did scripting and she does the count my blessings thing and all. But particularly इस trip के लिए उसने लिखा भी नहीं था कि मेरी जो मतलब ये budget एक वाला होना चाहिए या economic होना चाहिए. In spite of that, she got all this. So that's what she wanted to share ना कि मैंने लिखा नहीं था इसके बारे में particularly. But वो हुआ. But scripting उसने करी थी. कहीं जाने से पहले वो scripting जरूर करती है. तो scripting उसने करी थी. Because of that only she got it. And thanking the 5 elements also, she is the regular, a very great practitioner also. So obviously she does all the practices. And particularly for this thing, she didn't practice anything. But that उसका जो favor है ना सारा का सारा उसको यहाँ पर मिल गया because she is a great practitioner. That's why. Yeah. Oh wow. So scripting रोज करी थी कि मतलब 10 दिन 11 दिन कितनी बार ऐसे मैं and let her come back or maybe you can just ask her that question. Yes. Yeah. Yes, So ma'am. hi Yeah. Poonam. Thank you Priya for sharing. You're such a Thank you. backbone always. Yes, ma'am. So, ma'am, yesterday morning when I got up, my WhatsApp and my Insta was not working, and we all do all our work, my all communication with my clients, and everyone is through WhatsApp. And so, but luckily, मेरे laptop से I could join the session. बट कल मुझे बाहर जाना था, मुझे कुछ काम था, मेरी सोशल मतलब कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी, मैं बाहर गई तो मालूम पड़ा कि वो सैमसंग स्टोर गई, वहां पर भी नहीं हुआ. मतलब थ्रू आउट द डे आई वाज रनिंग फ्रॉम वन सैमसंग स्टोर टू अनदर एंड बट द होल टाइम आई वाज डूइंग ग्रैटिट्यूड. जब मैं जा भी रही थी मैं ग्रैटिट्यूड वॉक कर रही थी. जब स्टोर पहुंची, जब सेकंड स्टोर पहुंची विच वाज लाइक कि उस वहां पक्का हो जाएगा, ही सेड मैम आपको तो फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा. एंड बस व्हाट्सएप में ये था कि इफ आई डोंट लाइक अगर मैं रीसेट करूंगी तो द डेटा लॉस हो जाएगा. सो द होल टाइम आई मीन मैं अपने फोन के लिए सब चीज के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड कर रही थी. कुछ भी नहीं हुआ रात तक. ऑल्सो आई वाज इन दिस सिचुएशन. सो रात को जब मैं सोई ना, मैंने बहुत ग्रैटिट्यूड करा, जब मैजिक क्लॉक भी करा और साथ में मैंने बोला सबकॉन्शियस माइंड को, मैंने बोला मुझे नहीं पता, देयर हैज टू बी मैजिक. मैं जब सुबह उठूं मुझे एकदम ठीक मिलना चाहिए, मुझे नहीं पता. देन आधी रात को भी मेरी नींद खुली एंड आई कुड नॉट स्लीप. तो मैं बैठकर मैंने मेडिटेशन करी एंड आई वाज सेइंग कि यू नो आई वांट टू अवेकन दिस पावर एंड सी द मिरेकल अराउंड मी. जब मैं सुबह उठी उसके बाद जब मैंने अपना ऑन करा सिस्टम, मैं जब उठने के बाद तुरंत ऑन नहीं करती हूँ, मैं नियरिंग द क्लास ऑन करती हूँ. सो यू वोंट बिलीव मी मैम, माई व्हाट्सएप वाज वर्किंग और मुझे थोड़ा टाइम लग गया सेशन में आने को बिकॉज मुझे वो बैकअप मैसेजेस कर रहा था, तो वो टाइम लग गया उसको बैकअप करने को. 2 दिन के मैसेजेस हो गए थे. सो आई जस्ट वांटेड टू टेल दैट यू नो समटाइम व्हेन यू जस्ट हैरविंग रनिंग हियर एंड देयर, व्हेन यू जस्ट सिट डाउन पीसफुली कामली और बहुत ग्रैटिट्यूड करते हो और बहुत अपने सबकॉन्शियस माइंड को, द इन्फिनाइट इंटेलिजेंस को जब तुम अवेकन करते हो तो यू सी द मिरेकल. एंड सिंस मॉर्निंग आई मीन दैट जोन ऑफ लाइक माय गॉड दिस सो मच ऑफ मिरेकल अराउंड, और हम कभी कभी भूल जाते हैं. या बट आई रियली वांटेड टू शेयर दिस. और मैंने कल रात को भी ये सोचा था कि मैं सुबह उठकर सेशन में ये शेयर करूंगी कि मेरा फोन का ऐसे हुआ. एंड इट्स एक्चुअली सबको लग रहा होगा कि बहुत छोटी शेयरिंग है, मुझे पता है कि कल मेरा पूरा दिन कैसे निकला है, मुझे पता है. थैंक यू सो मच. आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, बहुत एक्चुअली बड़ी समस्या है. हम समझ सकते हैं एक्चुअली. सो I could not do my client calls also yesterday. yeah, And I know our work revolves around was WhatsApp no a lot. way Yeah, with them कि मैं नहीं कर पा रही हूँ. There was no way I Yeah. could do. totally. Thank And you. because our clients are not all in India, you know, they are mostly international also. So, And and is then that's the only way you can connect with them is on a WhatsApp call and a WhatsApp message. उनके पास था जो टेक्नीशियंस थे, तो मैं उनसे कॉल भी नहीं कर पा रही थी, बल्कि उनको बताने को कॉल नहीं कर. That's what. No, I had also got your call that my WhatsApp is not working and all of that. I like a message. Yeah.
Yeah, that's a great sharing. In the moment we say thank you to anything we see. My car music system, similarly like this, just stopped working one day, and I was fixing it, doing things. Then I said, okay, forget it. I was just like, thank you to the music. Thank you that I enjoy the music so much. I read a lot, like ebooks when I'm driving. And so, like I was missing that, and I said so much thank you. And then out of the blue, after about 4-5 minutes, it started working. So yeah, it's a quick fix for sure. So thank you for sharing. And this gives us a realization how much power does a gratitude have. And Priya, that she shared about this person's trip, 88,000 into 3 is not at all a joke. Okay, being free of cost, amongst other things, the benefits that happen. So amazing. Thank you so much. Beautiful weather here. Heavy downpour in Delhi. I hope everybody reaches office safe today. Vani ho rahi hai, Poonam? Defense Colony doesn't have rain, but it's But the weather is very powerfully clouded. It's expected anytime. Yeah, overcast. Yeah. It's All very right. Bye-bye then. We'll all see you Bye. tomorrow morning. Thank you, Till Deepti. then. Thank you so much, ma'am. Bye-bye. Pure magical air that I breathe right now. The first, we have to do it 5 times today. Let's do 1, and then after 1 hour, we'll do 1 more. Let's at least complete 2 in the next 1 hour. Otherwise, we'll put it in busy ho jayenge. sab log. Ma'am, John sir's hand is Bye. raised. Thank you so much, and have a Thank brilliant you. day full of love and laughter. Thank Tomorrow, you. tomorrow. I'll- Thank you, ma'am.